जय जगन्नाथ फिजिक्स हंटर नुआ एक क्लास को समस्त को स्वागत। आज टॉपिक ऑफ द डे होची ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिला माने ध्यान रख ये जो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन 11th क्लास फिजिक्स। कहिबार कारण ए कि जे हमर जो क्वेश्चन वेराइटीज अछि सिंगल मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क आउ 6 मार्क रो क्वेश्चन सबु वेराइटी रो क्वेश्चन ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नु आसी पारे। तेनु आज रो क्लास को हमें सेति की इंपोर्टेंस आउ सेति की माइंड हार्ट लगेगी पढिबा बुझिबा लेखिबा। चलो आज रो क्लास आरंभ करिबा। फर्स्ट हेडिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्लास रे हमें पढ़िथिले जेतेबेले दुई बा अधिक वेक्टर को आमे परस्पर सहित ऐड करंती वी विल गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर को आमे पाइबा तार इफेक्ट विल बी इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स इफेक्ट। तेणु जेतेबेले दुई बा ताठू अधिक वेक्टर को आमे परस्पर सहित ऐड करचोंती आमे गोटे रिजल्टेंट वेक्टर पाउचोंती। जेतले दुईटा वेक्टर परस्पर सहित ऐड होची आमे ट्रायंगल लॉ किंबा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करचोंती। आउ जेतले दुई रु अधिक वेक्टर को आमे ऐड करचोंती सेतेबेले आमे पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करचोंती। तेणु एई क्षेत्र रे आमे दुईटा वेक्टर को नेकी आगु को बढ़िबा। तेणु बाय डेफिनेशन इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented in the terms of both magnitude and direction of two sides of a जेहेतु ए ट्रायंगल लो तेणु बोथ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द इट मोस्ट इंपोर्टेंट कथा कौन हमको मन रखिया पड़िबो ए जो दुईटा साइड टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड of the triangle taken in opposite order is the resultant vector. Simple definition जेतले क्वेश्चन आसीबो कि डिफाइन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें सेतले एमते लिख परिबा इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ जदी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें सपोज दीटा वेक्टर नेले कोन वेक्टर ए वेक्टर and b वेक्टर आउ ए जो दीटा वेक्टर नेले आमे ताको कोन करिबा ना दीटा साइड ऑफ ए ट्रायंगल को भाबरे रिप्रेजेंट करिया। सपोज हियर इज ए ट्रायंगल दीटा साइड एज ओ पी क्यू आमे ए वेक्टर को ओ पी साइड आउ बी वेक्टर को पी क्यू साइड भाबरे रिप्रेजेंट करले ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ओ ट्रायंगल ना ए ओ पी क्यू ट्रायंगल आउ ओ पी एंड पी क्यू आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड ओ क्यू is the resultant of vector addition a plus b. If vector a and vector b are represented as the two sides of a triangle o p q taken in same order, both the sides are taken in same order, then the third side OQ taken in opposite order will be the resultant of these two vector. एटा को हमें कोन कहउचंती ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
then r vector is the resultant vector. If r vector is equal to OQ acts in the opposite order is the resultant. बुझिला एबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जदी 2 मार्किया क्वेश्चन आसे तले एतिकी हमें लिखि देले हमको कंप्लीटली 2 मार्क मिल जिवो कोन ना जदी ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमें दुईटा साइड भाबरे कहार ना ट्रायंगल OPQ बा जे कोनोसी ट्रायंगल हमें नै परिबा तो दुईटा साइड टेकन इन सेम ऑर्डर भाबरे रिप्रेजेंट करतंती इन द टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, then the third side taken in opposite order OQ is the resultant vector. एबे हमें या को एनालिटिकल मेथड रे रिप्रेजेंट करबा जेतले लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो सेतले हमको एनालिटिकल मेथड रे रिप्रेजेंट करिया पड़िबो से क्षेत्र रे हम ताको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करबा सबले पिला माने गोटे कथा मन रखिबो कि जेतले वेक्टर एडिशन कथा उठुची सेतले हमें वेक्टर एडिशन को ज्योमेट्रिकली ऐड करचोंती जेतले स्केलर एडिशन कथा उठिबो सेतबेले हमें स्केलर क्वांटिटीज को अलजेब्रिक सम बा नॉर्मल वे ऑफ एडिशन मेथड रे रिजल्टेंट बाहर करचोंती तेनु हमें जेतले वेक्टर एडिशन करबा वी विल ऐड इट ज्योमेट्रिकली नाउ द एनालिटिकल मेथड हमें गोटे सुंदर ट्रायंगल बर्तन बनवा जोटा पूरा क्लियरली विजिबल हो आ जोठु हमें सहज रे बुझि परिबा लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल ट्रायंगल कोन ड्रॉ कले फर्स्ट ए वेक्टर को ओ पी पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी को हमें ए वेक्टर भाव रिप्रेजेंट कले पी क्यू को हमें बी वेक्टर भाव रे रिप्रेजेंट कले नाउ लेट्स ड्रॉ ओ क्यू the third side of the triangle taken in opposite order. According to triangle law of vector addition, OQ is equal to R is equal to the resultant of the vector. Now, here OP represented as A vector, PQ is represented as B vector, and R is the, by definition, is the resultant. हमें वर्तमान जेतले कोन करिबा ना in triangle OPQ, OP and PB, PQ are represent as vector A and B. Now, according to triangle law of vector addition, OP vector plus PQ is equal to OQ. A vector plus B vector is equal to R vector by resultant vector. According to triangle law of vector addition, now एबे हमें कौन करिबा ना OQ को एक्सटेंड करिबा आउ Q रु गुटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा जहां पे हमें QT ना दे दबा एट देखो भलो भाबरे हमें we draw a perpendicular Q to QT on the extended OP ए माने T टार इंटरसेक्ट करले तनो हमें कोन गुटे पाइ गेले नुवा ट्रायंगल नाउ we get a rectangular triangle QPT जोटी theta is the angle between two vector A and B. theta होची vector A and vector B मध्य रे angle अब आमे नुवा vector पाइले QPT rectangular vector. Now in rectangular triangle ध्यान रखो एउठु ही triangle of vector addition रो भविष्यत निर्धारण होबो देखो भलो से इन रेक्टेंगल ट्रायंगल ओ क्यू ओ टी ए जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगल हम पाइले ए गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा द्वारा क्यू ओ टी
rectangular triangle r square is equal to qt रो square plus ot रो square ताले एटी r रो किए जदि r रो square qt रो square आ ot रो square होची ताले qt रो square plus ot केते ना op plus pt plus ot plus pt रो square काहे कि ना जेहेतु OT is equal to OP plus PT. Now QT रो square is equal to OT रो square plus PT रो square plus 2OT plus PT. जेमती A plus B रो होल स्क्वायर सूत्र हमें बाहर करती सेमती QT plus PT रो होल स्क्वायर हेले QT स्क्वायर plus PT स्क्वायर plus 2OT plus PT. एटा हमको ध्यान रखिया पड़िबो जेतेबेले आमे पीटी रो वैल्यू बाहर करिबा आउ पी क्यू रो वैल्यू को बाहर करिके एठी पुट करिबा सेतेबेले आमे कोन पाइबा ना रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड पाइ जिबा सेथि पई कहली एउठु ही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नो भविष्यत निर्धारित हेबो एबे कोन देखिबा इन ट्रायंगल QPT इन ट्रायंगल QPT cos थीटा is equal to केते adjacent side PT by PQ is equal to PT by B vector then PT रो वैल्यू केते भरला B cos theta similarly sin थीटा ऑपोजिट साइड के ना QT by PQ is equal to QT by B vector is equal to QT is equal to B sin थीटा हमें ये दिटा वैल्यू पाई गल एटा को ध्यान ने रखिया को पड़ियो बुझिलो पिले एबे जागार अभाव 30 सेकंड टाइम एटा को भल जो माने नोट करछुंदी भलो से नोट कर नियंतु तापर हमें नेक्स्ट फेज को जिबा लेखिनेलो पिले माने नाउ हमें कौन जानी थिले we know that r vector is equal to कौन पाइथिले QT रो स्क्वायर प्लस OP रो स्क्वायर प्लस PT रो स्क्वायर प्लस 2OP into PT एटा हम प्रथम बाहर करथले प्रथम इक्वेशन ने तेनु यार जो मैग्नेट रिजल्ट आमे पाइले PT रो वैल्यू जा पाइले आ Q2 रो जा वैल्यू पाइले आमे ए इक्वेशन रे ताको फिट कर दवा Q2 केते Q2 is equal to B sin थीटा रो स्क्वायर प्लस OP केते पाइथिले OP होची A वेक्टर रो स्क्वायर नेक्स्ट PT रो वैल्यू केते B cos थीटा रो स्क्वायर प्लस 2 OP केते A वेक्टर इनटू B cos थीटा सिमिलरली चलिबा आगु बढ़ी बढ़ी चलिबा ताले B स्क्वायर आरो मार्क को ध्यान रखतो पिले बाय चांस कोठी छाडी जाउथिबी A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 AB cos थीटा नाउ
आमे कोन करिया ए जो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा रु b स्क्वायर को कॉमन नै जिबा ताले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ठीक है को भलो से अरेंज कर दवा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आमे भला जानचंती कि एटा होची कॉमन फार्मूला ऑफ ट्रायंगल बा कॉमन फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कोन ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रो वैल्यू होची 1 एटा होची कॉमन फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री तेनु ए जो sin स्क्वायर थीटा बा cos स्क्वायर थीटा रो वैल्यू केते हे गेला 1 तेनु b स्क्वायर into 1 is equal to b स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab cos थीटा is equal to वेक्टर r स्क्वायर रो वैल्यू तेनु r स्क्वायर रो वैल्यू जतला हमें पाइले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा देन r रो वैल्यू केते हबो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो रूट ओवर दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant of two vector a and b gives the resultant of two vectors a and b हैला आमे वेक्टर तो मैग्नीट्यूड पाई गले आउ जानि चंती आमे तो जते बेले भी वेक्टर विषय रे आमे डिस्कशन करचंती मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो आर हमु कोन देला वेक्टर रो मैग्नीट्यूड देला एबे हमकु वेक्टर रो डायरेक्शन बाहर करिवार अछि सपोज वेक्टर रो रिजल्टेंट रो डायरेक्शन होची बीटा now we will find the value of beta the angle of resultant लेखिनियो जो माने भी न लेखचंती 10 सेकंड टाइम now tan beta is equal to qt by ot the opposite side upon कोन adjacent side of the triangle qt रो वैल्यू केते हम बाहर करथिले ना b sin थीटा आउ ot कोन थिला ना op plus pt OP रो b sin थीटा डिवाइडेड बाय OP रो वैल्यू केते वेक्टर a प्लस pt रो वैल्यू केते थिला b cos थीटा नाउ द एंगल बीटा इज इक्वल टू tan टू द पावर -1 b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा gives the direction of the resultant vector बुझिला पिला माने हमें प्रथमे r रो मैग्नीट्यूड पाइले एबे r रो डायरेक्शन पाइले एई भली भाबरे हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जतले लॉन्ग क्वेश्चन आस्तिबो एनालिटिकल मेथड रे हमें तार मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को बाहर करि परिबा एबे कोन आसिला ना नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जदी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमें बढ़िया से बुझी नेले ताले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को केमती चुटकी रे सहज रे बुझी हबो भलो से देखो गोटे पैरेललोग्राम हमें ड्रा करिबा अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन जदि आमे दुईटा वेक्टर को वेक्टर सपोज दुईटा वेक्टर आमे नेले वेक्टर a एंड वेक्टर b जदि दुईटा वेक्टर को आमे टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम भाबरे रिप्रेजेंट कर दोंती इन द टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सपोज ए दुईटा एडजेसेंट साइड ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट o एको आमे वेक्टर a ना देले एको आमे वेक्टर
बी ना देले जदि एटा वेक्टर ए तार लाइक वेक्टर किए हबो ये भी यार भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान रहिबो जदि एटा वेक्टर बी देले ताल ए भी तार लाइक वेक्टर यार मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समान रहिबो जदि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम हम रिप्रेजेंट करचंती ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज द resultant of two vectors in the terms of magnitude as well as direction then this is the resultant vector एटा को हमें गोटे पैरेललोग्राम रो ना दे दबा O P Q S आ मु कोन कहली जदी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमें सहज रे आ भलो से पढी चंती बा बुझी चंती तारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चुटकी रे हबो ए जो पैरेललोग्राम जदी OP साइड को हमें एक्सटेंड करिबा आउ Q2 Q रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा QT ताहले एई जो पार्ट को लक्ष्य कर ताले हमें कोन पाइले हमें पाइले गोटे QOT ट्रायंगल ताले एउठू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चलिला तणु पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भितरे ऑलरेडी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लुचि की अछि ताको हमकु देखि की बाहर करिवार अछि तेनु एठी हमें रिजल्टेंट रो कोन पाइ जिबा ना डायरेक्शन पाइ जिबा एटी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर काई ना पी क्यू बा बी वेक्टर इज द लाइक वेक्टर ऑफ ओ एस बुझला तेणु पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नामे डेफिनेशन को लिखि दबा आ जिंसटा को हमें बुझिले सहज रे एबे कोन हला ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन definition होची if two vectors are represented as two sides of a parallel to adjacent parallelogram in the terms of both magnitude and direction drawn from a common point then the resultant is the diagonal of the parallelogram drawn from that point. 2 मार्क रो क्वेश्चन आसी पारे डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डायग्राम करिवो डेफिनेशन करिवो 2 मार्क पाइबो हला एबे स्पेशल केस को हमें जिबा कौन स्पेशल केस है पारे स्पेशल केस कोठु डिफाइन हबो ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा डिफाइन करिवो ए स्पेशल केसेस को थीटा रो वैल्यू अनुसार हमें केतेबेले मैक्सिमम वैल्यू पाइबा केतेबेले मिनिमम वैल्यू पाइबा आउ केतेबेले एवरेज वैल्यू पाइबा मु कोन कहितली ए जो टॉपिक आज हमें पढिबा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एथिरे 1 मार्क रो क्वेश्चन पाइबा 2 मार्क रो क्वेश्चन पाइबा 3 मार्क रो क्वेश्चन पाइबा आउ 6 मार्क रो भी क्वेश्चन पाइबा 6 मार्क रो क्वेश्चन में कोन हमें पाइबा डेफिनेशन आसीबो एनालिटिकल मेथड आसीबो ता संग गोटे न्यूमेरिकल्स को जोड़ी दबो हे गेला 6 मार्क रो क्वेश्चन सिंगल मार्क रो क्वेश्चन कोन आसीबो या भितरु शॉर्ट क्वेश्चन हमें 8टा की 10टा शॉर्ट क्वेश्चन पाइबा सपोज फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन आसीबो वेक्टर एडिशन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन इज ब्लैंक कौन फिल इन द ब्लैंक्स रे कौन लिखिबा ना द ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन इज इमैटेरियल बा तापर गोटे क्वेश्चन कोन आसीबो वेक्टर एडिशन इज डैश कौन लिखिबो कम्यूटेटिव माने ऑर्डर ऑफ जदी अर्थ a प्लस b वेक्टर रो वैल्यू जा b प्लस a वेक्टर रो वैल्यू ताहा बा इक्वल टू r हला तनो ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन इज इमैटेरियल इमैटेरियल अर्थ रहउची लेस इंपोर्टेंट बा
नॉट इंपोर्टेंट बुझिला एमती बहुत शॉर्ट क्वेश्चन या भितरु हमें बाहर करि परिबा तेनु जे भलो पिला आउ जहार लक्ष्य सबले टॉप रे स्कोर करिबा से या भितरु अनेक किछि क्वेश्चन बनेइबा सिखि जिवे तेनु गुटे कथा पिला माने ध्यान रख क्वेश्चन भलो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर दबा जेतिक इंपोर्टेंट नुआ नुआ क्वेश्चन बनेइबा सिखिबा भी सेतिक इंपोर्टेंट जे क्वेश्चन बनेइबार टेक्निक सिखि गला से जाना सक्सेस हे गला बा जीति गला तेनु स्पेशल केसेस विषय में टिके डिस्कशन कर दबा ताले केस 1 कोन व्हेन थीटा इज 0 डिग्री जेतो थीटा 0 डिग्री तार अर्थ कोन बोथ द वेक्टर्स a वेक्टर and b vector are acting in same direction vector a and vector b is acting in same direction then theta is 0 degree आमे रिजल्टेंट रो वैल्यू कोन बाहर करथिले ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो रूट ओवर तेनु एठी आमे कोन वैल्यू पुट करिया पड़िबो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 0 डिग्री then cos 0 डिग्री रो वैल्यू केते ना cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 तेनु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रो रूट ओवर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b ता a प्लस b हमें रिजल्टेंट कोन पाइले a प्लस b ताहले हमें जेतोले दुईटा वेक्टर एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द शॉर्ट क्वेश्चन आसे व्हेन वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू इन वेक्टर एडिशन सेतले कोन लिखिबो देतले व्हेन टू वेक्टर्स आर acting in the same direction or the angle between two vectors is 0 degree then we will get the maximum value gives the maximum value similarly case 2 कोन हबो जेतले both the vectors act in opposite direction or value of theta is equal to 180 degree जेतले or acts in opposite direction vector a and vector b acts in opposite direction then theta is 180 degree सेतेबेले आमे जदी cos 180 डिग्री रो वैल्यू पुट करिबा देले आमे कोन पाइबा -1 देन सेते सिमिलरली जदी आमे मैथमेटिकल एनालिसिस करिबा तना वी विल फाइंड r रो वैल्यू केते पाइबा ना a - b रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर इज इक्वल टू a - b बा we will get the minimum value of two vectors or resultant vectors gives the minimum value बुझिला एमती शॉर्ट क्वेश्चन भी सेथरु आसी पारे तापरे थर्ड केस कोन हबो केस 3 कोन केस 3 जेतले थीटा रो वैल्यू हमें पाइबा कोन ना 90 डिग्री व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर देन थीटा इज 90 डिग्री तन r रो वैल्यू कोन हम पाइबा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री 90 डिग्री रो वैल्यू तो होची 0 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो रूट ओवर देन r रो वैल्यू होची एतिक sum of the square of the root and r रो वैल्यू कोन हला रूट ओवर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू वेक्टर्स ताले हमें r रो वैल्यू बा एवरेज वैल्यू पाइजो ए तीनटा होची स्पेशल केसेस इन वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ध्यान रखिया पड़िबो जेतले हमें दुईटा वेक्टर को ऐड करतुंती सेतले हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बा पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करिया पड़िबो जेतले दुई रु अधिक वेक्टर को हमें ऐड करिबा सेतले हमें कोन ऐड करिबा ना पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आशा करछि आजिर क्लास समस्त को बुझा पड़थिबो सहज रे बुझिथिबो जय जगन्नाथ।